Hello, today we will see 2026 sample paper of class 12th. Here, see question number 1. In question number 1, it is given that identify the function shown in the graph. You have to identify the given function. See, here it's a -1, it's a 1, and here pi by 2 and minus pi by 2. So we know it is a sine function, sine inverse x. Okay, so what is the range of x? X is greater than equals to and less than equals to, x is greater than equals to -1 and less than equals to 1. But here x, here it's 1 and 0, there is between 1 upon 2. So it's a 1 upon 2 and it's 1 upon 2. When you divide the whole equation, it change, multiply by 2, 2x 1. So every function of sine x in between -1 to 1, but when it's half, minus half to plus half, then main argument is 2x. So it is sine inverse 2x. ओके, नेक्स्ट अगला देखेंगे हम क्या लिखा है. फॉर एवरी 3 मैट्राइसेस ए आई जे एम क्रॉस 4, बी आई जे एन क्रॉस 3 एंड सी आई जे पी क्रॉस क्यू, product AB and AC both are defined and are square matrix of same order, then value of M and PQ. आपको M and PQ की वैल्यू निकालनी है, बट आपको कंडीशन दे रखी है कि AB किसके इक्वल है, AC के. So here B and C are same, so N cross 3 P cross Q. So N equals to P and Q equals to 3. So अगर Q equals to 3 बन चुका है और N equals to P क्या होगा, 4. Here N 4 cross 3 and Q equals to 3 and P equals to 4 and M cross, it's 3 cross 4, so M equals to 3. Okay, so after comparison we see here NP equals to 4, MQ equals to 3, MQ equals to 3 and P equals to 4. It's our correct answer. Now the next one, if the matrix A, एक मैट्रिक्स दे रखा है A in is screw symmetric, then value of Q plus T P plus R is. So screw symmetric देखेंगे क्या होता है. here ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तब आंसर उसका नेगेटिव में आता है. ठीक है, नेगेटिव में आता है. वाई, सी द कंडीशन, लेट्स सी. अगर हम ऐसा करते हैं ए की पावर टी ट्रांसपोज करते हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, क्या होगा, 0 3 Q R P -4 and -2
t0 and it's -1. So all sign must be changed. Then it is 0, 3, -3, minus q, minus r, minus p, plus 4, plus 2, minus t, and 0. And there's a one condition that diagonal must be 0. Diagonal क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं. तो p इक्वल्स टू आ गया 0. ओके, अब कंपेयर करते हैं a और जो हमारा आया है -a. तो इसमें आप देखेंगे q की वैल्यू क्या हो जाएगी? q की वैल्यू दैट इज 2. Okay, here it's a q and here it's 2 after this condition. p की वैल्यू 0 आ चुकी है, t की वैल्यू 4, t equals to 4 and r equals to -3. Okay, put the values. q equals to 2, t equals to 4, p equals to 0 and r equals to, here it's a plus, r equals to -3. So it's 4 plus 2, 6 and -3, that is -2. So here answer is -2. Okay, now the next question, if A is a square matrix of order 4 and adjoint A equals to 27. Okay, so here it's a formula for adjoint A. Adjoint A equals to 27. You have to find A adjoint A. So here two basic formula. A adjoint A equals to AI adjoint A equals to A raised to the power n-1. Okay, इसको समझने के लिए भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा. अभी केवल आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A adjoint A. First see adjoint A आपको गिवन है. So what is A raised to the power n-1? That is 27. It's a exponential form. 3 raised to the power 2 minus 3 minus 3 raised to the power 3. You can write 3, 2 minus 1. So value of A is 3. A की वैल्यू क्या है? 3. और अगर आप इसमें पुट करते हैं तो it's 3i. That is the value of A adjoint A. So A adjoint A is equals to 3i. The inverse of matrix 3 0 0 0 2 0 0 0 5. So inverse is 3 raised to the power -1 and 1 upon 3, 1 upon 2 and 1 upon 5. 1 upon 3, 1 upon 2 and 1 upon 5. It's inverse. Now value of determinant. Determinant की वैल्यू निकालेंगे. Very well we know AC minus B AD minus BC. A, B, C and here it's D. तो क्या हो जाएगा? AD करेंगे तो cos 67 cos 23 minus sin 67 sin 23. So cos A cos B minus sin A sin B, that is cos A plus B. 67 plus 23, that is cos 90, that is 0. Okay, question number 7. Here it's a given that
for less than equals to kx plus 1, greater equals to pi is cos x. So you have given that it is a continuous function, ये continuous function है. तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी continuous होता है तो हमें पता होता है लिमिट x tends to 0 fx, here x tends to pi, and LHL is equals to RHL. सी, सो पहले हम fx पे देखते हैं. तो इट्स k pi plus 1. when you put greater than RHL, then left hand limit x is greater than equals to pi, it is cos pi, and value of cos pi is -1, and value of k is now -1 upon pi, so it's -2 upon pi. तो ये -2 upon pi इसकी वैल्यू होगी. 8 वाला देखेंगे, fx इक्वल्स टू x tan इनवर्स x, f डैश x आपको निकालना है. तो f डैश x इट मीन्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेशन आपको करना है. तो कैसे करेंगे, हियर इट्स अ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square plus tan inverse x as it is, then x is 1. Okay, so f dash 1, we have to find f dash 1, so you have to put 1. now 1 plus 1 upon 2, that is in multiply, प्लस tan इनवर्स 1 कब आता है, पाई बाय 4 पर. सो इट्स 1 अपॉन 2 पाई बाय 4, 1 अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, that is b. now the next question, a function fx equals to 10 minus x minus 2x square. so एक फंक्शन है fx 10 minus x minus 2x square is increasing on the interval. so interval पे increasing है. so increasing के लिए क्या करते हैं हम, we know very well when the function is increasing f dash x is greater than 0, greater than equals to 0, function f dash x. तो आप करेंगे इसका f dash x, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. हियर माइनस, टेक इट आउट कॉमन, 1 प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कॉमा, व्हेन साइन चेंज it's 1 plus 4x less than equals to 0, and x is less than minus 1 upon 4. so it's minus infinity to minus 1 upon 4, minus infinity to minus 1 upon 4. now the solution of differential equation x dx plus y dy equals to 0 represent a family of, कौन सी family को represent कर रहा है देखेंगे. if it is given that x dx minus y dy, you have to integrate, then it is a x square upon 2 plus y square upon 2 equals to k. so here it's the equation of circles. okay, so it's a circle. now the next question we will start in our new video. thank you for today. if you have any doubt, comment it below. see you next time. bye.